Hello, my dear students. Now I am going to solve another question from C Verma. Question asking, figure 5e21 shows a man of mass 60 kg. Mass of the man is given 60 kg. Okay. Standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. ये जो बॉक्स दी गई है इसकी मास है 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at rest, what is the weight shown by the machine? What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब बॉक्स रेस्ट पे होगा तब मैन का जो मैनेज कर रहा है वो उसका एपरेंट वेट क्या होगा. व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन. वेगिंग मशीन जो वेट शो करती है उसे हम एपरेंट वेट बोलते हैं. ओके. और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन. कितना फोर्स ये रोप पे लगाएगा जिससे कि इसका करेक्ट वेट जो है वेगिंग मशीन में शो करेगा. ओके. सो how we will solve? First of all, we have to draw free body diagram of the box and a man. बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना रहे हैं. ओके. इसमें mg कैपिटल M मानते हैं बॉक्स के मास को. कैपिटल mg डाउनवर्ड लेगी. जो टेंशन है रोप पे वो T होगी. और देखिए इसमें क्या है, मैन जो है वो वेगिंग मशीन पे खड़ा है. ठीक है. इन द सेंस वो बॉक्स पे खड़ा है तो वो mg अगर डाउनवर्ड अगर फोर्स लगाएगा तो बॉक्स भी उस पे क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में लगाएगा. तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं उसका डाउनवर्ड में. इसी तरह मैन का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो मैन है, ये आपकी टेंशन अपर डायरेक्शन में रोप की वजह से टेंशन हो रही है जो वो फोर्स, और नॉर्मल फोर्स जो लगाएगा वो भी अपर डायरेक्शन में, और इसकी mg फोर्स जो होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज टू फ्री बॉडी डायग्राम इक्वेशन. फर्स्ट को अगर हम सोल्व करें तो क्या होगा हमारे पास, T इज इक्वल टू n प्लस mg. ओके. सेकंड आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, T प्लस n इज इक्वल टू mg. ओके. सो सिंपली व्हाट वी विल डू, we will simply put the value of T is equal to n plus mg in the second equation. We have to find apparent weight. Apparent weight in the sense normal force. Okay. So when we put the value of T in equation second, so we will get the apparent weight n. तो क्या हो जाएगी, n प्लस कैपिटल mg प्लस n इक्वल टू स्मॉल mg. कैपिटल M बॉक्स की मास है और स्मॉल m मैन की मास है. तो यहां से क्या बन जाएगी हमारी 2n प्लस mg इक्वल टू स्मॉल mg. ओके. Now we simply put the value 2n प्लस कैपिटल M कितनी दी हुई है, हमारी बॉक्स की मास 30 kg दी हुई है तो 30 g रखते हैं. ओके. ग्रेविटी को एक्सेलरेशन को नहीं चेंज करते हैं, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन जो है, और स्मॉल m हमारी 60 दी हुई है. ओके. तो 2n इज इक्वल टू 30 g. So n is equal to 15g. ओके. सो हमारी n जो आ रही है वो 15g आ रही है. अब देखिए n is equal to 15g इन द सेंस
15 kg. Okay. Why 15 kg? Because we know that apparent weight, that is n जो आपकी होती है वो क्या होती है, mg apparent weight. ओके, तो जी जी कैंसिल अगर होती है तो मास कितनी हो जाएगी, जो apparent जो वेगिंग मशीन दिखाएगी वो हमारी दिखा रही है 15 kg, जो मैन की मास है. ओके, जबकि ओरिजिनली उसकी मास कितनी है, 60 kg. बट हेयर वेगिंग मशीन शोइंग. नाउ we have to solve another question. What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? इस वक्त क्या था, ये रोप को होल्ड किए हुए था. ओके, इतना फोर्स से वो होल्ड किए हुए था कि जिससे कि वो जो बॉक्स है जिसमें वो खड़ा है वो आराम से रेस्ट पे है. ठीक है, वो बस उसे होल्ड किए हुए है, इतना की फोर्स लगा रहा है कि वो बस रेस्ट में रहे, वो मूव ना करे. ओके, सपोज कीजिए उसे अगर पूरे बॉक्स को अगर मूव करना होगा तब कितना फोर्स अप्लाई करना होगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर आप किसी रोप को पकड़ के खड़े हो, ठीक है, और वो पूरा जो बॉक्स है जो जिसमें आप भी हो और वो पुली से अटैच्ड है और आपको फोर्स पूरी लगानी पड़ेगी ताकि वो बॉक्स के साथ आप भी ऊपर जा सको, तो ऑब्वियस बात है आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. ठीक है, और तभी आपकी जो वेट है वो एग्जैक्ट वेट आपकी वेइंग मशीन में शो करेगी. ओके, सो हाउ वी विल सॉल्व, सिंपली again we have to draw free body diagram. बॉक्स mg डाउनवर्ड लगाएगी और टेंशन अपवर्ड लगाएगी और एक्सीलरेट ये अपर डायरेक्शन में होगी. ओके, एक्सीलरेट ये अपर डायरेक्शन में होगी, तभी तो हम टेंशन फोर्स निकाल पाएंगे. वो एक्सीलरेट नहीं होगी तो फिर फोर्स कैसे निकाल पाएंगे कि कितनी फोर्स वो अप्लाई कर रहा है रोप पे. और जो इसकी नॉर्मल फोर्स होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, क्योंकि मैन भी तो लगा रहा होगा. टेंशन टी अपर डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स, एक्सीलरेट अपर डायरेक्शन, स्मॉल mg. Okay, so what we have, first equation, simply t minus n minus mg is equal to ma, and what we will get the second equation, we get t plus n minus a small mg is equal to a small ma. Okay, so how much force he applied on the rope. Okay, in the sense how much tension develop in the rope, so we have to find tension. Okay, so how we will solve, we know that n is equal to, second equation, we are consider second equation to solve t value. Okay, so simply t plus, we put the n is equal to, we know that n is equal to mg. Okay, so simply put the mg minus mg is equal to ma. So mg cancel, so we get the t is equal to a small m. So we have acceleration is equal to t by a small m. Okay, now we have to put the value of, put the
value of acceleration A in equation first. Okay, when we put the value of acceleration in the equation first, then we get the value of tension, yeah, force. Okay, so how much acceleration is equal to T by M. So when we solve T minus mg minus capital Mg is equal to capital M into T by a small m. Okay, now we are going to put the value of original value of the mass. Okay, human body mass and box mass. So how much we get the tension? T minus a small m given mass of the man, that is a 60 g, minus box of the mass, that is a 30 g, is equal to 30 into T by 60. So we get the 2 cancel 30. Okay, so we get value T minus T by 2 equal to 90 g. Okay, so we get T by 2 is equal to 90 g. So tension is equal to how much? That is 1800. Okay, Newton. That is force. Okay, that is your answer. We get the answer. We have to find the force. Okay, so we get how much force applied on the rope, that is a 1800 Newton. Then man will get the exact value of the weight. Okay, how much his weight, that is a 60 kg. So he can show in the weighing machine his weight is exact 60 kg when totally full box accelerate. Okay, and when he applied how much, 1800 Newton. Okay, force on the rope, yet we can say the tension on the rope. Okay, so simply write down